नमस्कार। पहलगाम रे आतंकी आक्रमणर जवाब देइछि भारत। ऑपरेशन सिंदूर माध्यम रे मात्र अध घंटाए भितरे 9टी आतंकी आड्डा उपरे हमला करिछि भारतर सेनाबाहिनी एवं हासिल करिछि सफलता। केवल सफलता हासिल करिछि नुहे, पड़ोसी पाकिस्तान को मध्य चेतावनी देवारे समर्थ होइछि भारत जे आतंकवादी आक्रमण को एवं आतंकवादी को प्रतिहत करने पाई भारत आज भी समर्थ अच्छी एवं कौन प्रकार आतंकवाद को जो माने प्रश्रय दौरान तांको विरोध रे दरकार पड़े कठोर कार्यानुष्ठान निया जाई पारे ए प्रकार गोटे बड़ संकेत देइछि भारतर सेनाबाहिनी। तो पूरा ऑपरेशन सिंदूर किभली भाव में रहिला एवं पाकिस्तान को ये केते भाव में एक बड़ जवाब दबारे समर्थ होइछि ए नहीं कि विस्तृत आलोचना करिबा प्रतिरक्षा विशारद ग्रुप कैप्टेन अतनु गुरु सहित। ग्रुप कैप्टेन अतनु गुरु ऑपरेशन सिंदूर जो भली भाव में भारत को एक बड़ सफलता देला, आतंकवादी को गोटे वार्ता देला एवं पाकिस्तान भली राष्ट्र को मध्य चेतावनी देला। ये पूरा प्रकरण को आपण किभली भाव में देखंती? देखंतु जदि आमे 10-15 वर्ष आगुरु पळेबा हमर बॉम्बे अटैक हला ता आगुरु बहुत अटैक हिची किंतु आमे बहुत किछि कहिछु किंतु केबे किछि करि के देखिनु माने विदाउट गोइंग इनटू पॉलिटिकल माने स्पेक्ट्रम आई वुड लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दैट बेसिक थिंग एबे जहा देखुछु वेदर इट वाज उरी और बालाकोट और एबे पहलगाम आमे गोटे जोड़े जिनस दर्शाइछु गोटे होची इंटेंट और विल और द्वितीय होची क्षमता और कैपेबिलिटी। नॉर्मली लोक भावंती एमान खाली कथा कहिबे बट दे आर अ सॉफ्ट नेशन, दे विल नॉट रिटेलिएट। यार जवाब आमे उरी देइथलु। उरी वाज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स इनसाइड द पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तापरे आपनकर बालाकोट हला जोठी आमे एयर यूज कलु slightly deeper but again inside the Pakistan occupied Kashmir। आउ एई थरा जो हेला देखंतु हमर बालाकोट परे किछि मेजर इवेंट हेनी, मेजर माने आतंकवादी हमला आम उपरे हेनी किंतु गोटे होछि माने इफ आई स्ट्रे फ्रॉम द टॉपिक स्लाइटली हम इलेक्शन कलु we took away some of the powers from the security forces election हला परे। आउ आपण प्रमाणटा देखंतु एटा नुह कि आमे जदि इलेक्शन करि न थांतु एटा हे न थांता, we cannot say that with certainty। किंतु जो आमर सिक्योरिटी फोर्सेस रे गोटे प्लान अछि आउ जदि आमर से जगह इज नॉट अप टू इलेक्शन लेवल और पीस दिसिंग ताहले हमकु टिके केयरफुल रहबा दरकार। एई थरा कोन करछंती आमर प्रधानमंत्री बाहरे थिले से फेरी आसिले किंतु से आमर प्रधानमंत्री डिफरेंस होची ही डज नॉट टॉक इन पब्लिक मच माने एटलीस्ट द मीडिया को किंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस जानतिनी ही हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग। वी मस्ट रेस्पेक्ट दैट इज हिज वे ऑफ फंक्शनिंग। एठी कोन हला से जो स्पीच देले बिहार रे नॉर्मल पॉलिटिकल स्पीच को जाई पारे किंतु से सबले हिंदी रे कथा कहंती किंतु गोटे इंग्लिश स्टेटमेंट देले दैट वाज फॉर द वर्ल्ड ऑडियंस कि आमे एई थरो आमे जवाब देबू आउ एई जवाबटा will be stronger than the previous जवाब्स माने इनडायरेक्टली कहि देली कि आमे काहा को छाड़ीबू नाही। लाइक मोर जळा अछंती बंधु से जाउथले पहलगाम छुट्टी रे ही हैज हायर्ड अ हाउस फॉर अ मंथ एंड हाफ मो निजर ब्रदर इन लॉ मते पचारले आमे जिबू ना जिबूनी ही स्टोरी ऑन 15th में मु कहली इवन इफ यू आस्क द क्वेश्चन टू द प्राइम मिनिस्टर ही वुड बी कंफ्यूज्ड हिमसेल्फ के एते इम्पोंडरेबल्स रहिछि ए सिचुएशन रे। पाकिस्तान इज नॉट अ वॉकओवर कंट्री, तांकर इकोनॉमी खराब रहिता पारे तांकर बट दे क्लेम और दे हैव द एंड वेपन, दे हैव अ प्रोफेशनल आर्मी आल्सो, सो वी कैन नॉट टेक देम वेरी लाइटली। यदि आमे फेरी जो हमर चाणक्य नीति को यू नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। जेबे आपन को शत्रु को अंडर एस्टिमेट करले दैट इज द फर्स्ट सिग्नल ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो आमे कहिथिलु कि वी विल टेक एक्शन एट द प्लेस एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग
सो वन वाज वंडरिंग केबे मु भाबुतली मे बी मासे देढ़ मास पर हेबो बट जदि आमे डिले करथांतु बेसी मासे देढ़ मास पर कोन हुए कि द वर्ल्ड ओपिनियन स्टार्ट्स गैदरिंग मोमेंटम जो आमर ट्रेजेडी हेछि जो आमर सिंदूर निभे देछंती आमर स्त्री लोकन को मानकु फॉर व्हाटएवर रीजंस दैट दे हैव साइटेड व्हिच आर नॉट कोट हियर सेटा आमर पब्लिक मेमोरी शॉर्ट टर्म थाए आमे बहुत कथा कहू किंतु 2 हफ्ता 4 हफ्ता 2 मास 4 मास पर भूली जाओ जब मैं बेसी डेरी करथांतु ताहले मे बी द वर्ल्ड ओपिनियन अगेंस्ट अ कॉन्फ्लिक्ट वुड हैव एनहांस्ड फर्दर जोटा एबे भी होउछि हेबो आउ हमर जो अटैक करिवार मोमेंटम टा टिके कमी जाता बट वन वाज वंडरिंग कि आमे केमती करबा बिकॉज लास्ट टाइम वी लॉस्ट एयरक्राफ्ट वी हैड टेकन दे हैड टेकन वन ऑफ आवर पायलट्स इनटू कैप्टिविटी सेटा भलो कथा नुहो एई थरो दे हैव वी हैव लर्नड आवर लेसन्स फ्रॉम उरी फर्स्ट देन बालाकोट एई थरो देखंतु जहां जहां आमे भूल करथिलु सबु गुडा दे हैव रेक्टिफाइड इट one big mistake or amar jo achhi system is our own people ask questions to the armed forces did we do it ता पे जे देखले आज आपनकर जो कर्नल from the army and the wing commander of the air force Qureshi or Vyomika Singh they have given the broad outline ki ame कोठी कलु with proof of destruction এই जो ऑपरेशन नामकरण करागला ऑपरेशन सिंदूर एवं नामकरण जो भली भाव में करा जाइछि परवर्ती समय रे जहाँ हमको सूचना देले कर्नेल सोफिया क्यूरेसी कहतु बा विंग कमांडर भूमिका सिंह कहतु एमाने जो भली भाव में सूचना देले ए सूचना आधार रे आपण को के भली भाव में देखुचंती जे जहाँ पूर्वरु देखिबा को मिलिथिला जहाँ आशा करा जाउथुला ताठु यथेष्ट भल बा गोटे बिफिटिंग रिप्लाई दबारे समर्थ हेछि भारत बिफिटिंग रिप्लाई तो हमर देबार थला किंतु को जागा रे कोन हेछि अलोंग विथ वीडियो माने हमर कैमरा थे व्हेन आई फायर फ्रॉम माय एयरक्राफ्ट मोर कैमरा रिकॉर्ड करे मु को टारगेट को मारि छी सो आई कैन नॉट टेल कि मुटा मादी के आसी छी बिकॉज़ सब रिकॉर्ड हेछि से रिकॉर्डिंग वाला देखा गला फॉर डिफरेंट ऑडियंस तापरे आमे जो एबे जे आगे आफ्टर 1971 वॉर वी हैव नेवर अटैक्ड इनसाइड पाकिस्तान POK is POK, but Itra में we have attacked Punjab. Bawalpur जो अच्छी जो हम अटैक करछे ता पाखरे ताकर एयरफोर्स बेस ता हमें सियालकोट अटैक करछु सो दिस टाइम वी हैव गॉन मच डीपर तो जो हमर ग्रेजुएटेड एस्केलेशन फ्रॉम उरी टू बालाकोट टू एबे जो ऑफ सिंदूर सिग्निफिकेंस रही छै गया we ought to be emotional for such an attack जोठी हमर हमकु पचारी की हम स्त्री को हम छुआ को सामने रे हमर पुरुष माननकु से माने तांकर सिंदूर लिभेई देले मिटेई देले सो से पई दिस नेम could not have been more apt operation sindoor that is one way of looking at it another way of looking at it is हमें जो आप देखंतु in the old days हमर युद्ध करि जाउथले हम ही स्त्री माने तांको स्वामी को सिंदूर लगौथले कि गो विजयी है कि आस तमें दैट इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट या तो आप देखिए कि मु सिंदूर लगेली फॉर व्हाट हैपेंड और मु सिंदूर लगेली कि कम बैक विक्टोरियस जो मिशन पे जाउछंती हमर जो डीप अटैक करिछु कोन एटा डिफरेंट कोन है छै फर्स्टली नो पाकिस्तान मिलिट्री टारगेट्स वर स्ट्रक सो डू दे रिटेलिएट एटा बहुत एक क्षमता हमर नथिला आगरे ए जो प्रिसिशन म्यूनिशन अछि स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ फायरिंग फ्रॉम आर इनसाइड आर इंटरनेशनल बॉर्डर 100 किलोमीटर्स डीपर जो हमर रेंज अछि से मिसाइल्स रो से क्षमता पय हम एटा करि पारलु सो ए जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हला स्टैंड ऑफ ये हला हमें इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करिनु सो वी हैव नॉट violated the Pakistani airspace. We have not attacked Pakistani military targets. आमे किसी civilian collateral damage करी ना हूँ जदि सही घर भीतर के civilian रहुचंती that is a different matter. तापरे third thing is both उरी रे आमे ये रे surgical strike रे आमे जदि आमे LOC को कोटे border मानिबा we had crossed the border. So there was no physical movement across the border.
ये सब कहीं कराइछ देखो हमर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर along with the prime minister we have been building up world opinion in our favor. So to keep our actions aligned to that favorable world opinion ame ei sab karinu. So as a result there is no international condemnation ebe jay heini. Turkey korichi it's a very bad but Turkey is an open supporter of Pakistan, we all know that. ग्रुप कैप्टेन गुरु जदि मोटामोटी भाव में ऑपरेशन सिंदूर को टिके आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा तो किभली भाव में ये उग्रवादी बा आतंकवादी संगठन आड्डा उपरे समर्थ आमे हेलु आक्रमण करिबा पई ताकू ध्वस्त विध्वस्त करिबा पई मात्र 25 रु 30 मिनिट भितर 9टी टार्गेट को आमे किभली हिट कलु या पई आज्ञा tremendous amount of coordination ହେଇଛି माने hats off to the planners जो एटा करि पारछंती. इनफैक्ट अपन किछि दिन तळे देखिथिबे हमर फाइटर एयरक्राफ्ट लैंडिंग ऑन द हाईवेज एक्सप्रेसवे रे जो हमर ता पई भी देखंतु मिलिटरी प्लानिंग हुए बट फॉर अ फाइटर एयरक्राफ्ट टू लैंड ऑन द रोड्स the amount of civil military cooperation collaboration it's of a very high order. मु सेही दिन मो स्त्री को कहउतली कि this is a big achievement. Our aircraft landing on the highways is a very big achievement kahi ki gote amaro jo air war ame padhouchu in our staff defense staff colleges. Major thing huchi when the air war starts one of the primary counter air operations jo kohuchu huchi runway denial. See runway denial ku ame capture कर देछु और we have put it aside because we have been able to land on the roads. So ए हिसाब रे ए जो हमरो tri service coordination हेछि 9 strikes on 21 targets in a time of 25 minutes own way. Degree of success हमें कहि परिबुनी because हमें जो जहा इंट थिला सेठी हमें weapon पकेछु and the destruction is visible. Now can this stop आतंकवाद सेटा होछि हमर प्रमुख क्वेश्चन. So ମୁଁ ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି ଆଜିକାଲି ବହୁତ WhatsApp forward ଆସୁଛି. It says terrorism is like an ant in an elephant's ear when the elephant is in a china shop. ଯଦି ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡି ହାତୀ କୁ କାମୁଡିଲା ସେ କିଛି କରିବ ଆଉ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଚାଇନା shop ରେ ଅଛି ତ କିଛି ଭାଙ୍ଗିବ. Some precious things will break in that shop. So ଆମର जो environment geopolitical environment is like a china shop. And we are an elephant compared to Pakistan in some ways. I would say who should pimpudi, but even a pimpudi can do us damage. But how do we maintain world support? Ame kemiti amaro minimum collateral damage, minimum nijara casualty kari ki ame kemiti amaro objective ko achieve karibu. तापे आम देखंतु आमे जो करिलु we have been very successful किंतु कोन हेछि what have we targeted? We have targeted terrorists. सेठी कोन होया गया? So this is it is more of a message, it is more of a warning ki don't mess with us. Even this could be a message for Bangladesh also कि आमे आम संगे तमे किछि करिवो आमे तमकु शिक्षा देबु in a good and strong way. जे पाकिस्तान भी होते रिटेलिएट करि पारे पाकिस्तान तरफ रु मध्य आक्रमण हेई पारे ए प्रकार संभावना अछि ना नाही? निश्चय अछि आज्ञा. पाकिस्तान इज द प्रोफेशनल आर्मी. तांकर आर्मी देयर आर्मी रो जो गोटे क्रेडिबिलिटी रो प्रश्न उठिछि जदि से माने चुप रहि जिबे ताहले तांकर क्रेडिबिलिटी विल रिमेन questionable for many years. And unlike the other democracies of the world, Pakistan army decides matters. Unlike us, we are a democracy. Semane nuhantu. Semane tankor army decide करे देशटा को दिशा रे जीवो. तो से सही आर्मी रो जदि क्रेडिबिलिटी पाई सेमान निश्चय चेष्टा करिवे हमकु रिटायर्ड करिया पई. को मात्रा रे करिवे that depends on the various जोठी सेमाने तांकर निज क्षमता रे हमकु आघात करि परिबे. ता पई they need money, they need weapons, they need support from everyone. जोटा तांको एथरा मिलुनी बेसी. जण प्रतिरक्षा विशारद हिसाब रे आपण भाबुचंती गोटे लिमिटेड वारफेयर भितर ये रहिबो ना गोटे फुल स्केल वार पई जदि पाकिस्तान चाहे ताले भारत भी प्रस्तुत रहइक पड़िबो? हमकु प्रस्तुत रहइक पड़िबो. अगेन no one wants a war but we cannot wish away a war totally.
जदि आमको माने इफ द फोर्स अस ताले आमको आमे ऑलरेडी रेडी अछि आमे प्रिपेयर्ड अछि बट आमे जेमिति पाकिस्तान सब तांकर मोबिलाइज कर देछि आमे मोबिलाइज करनी थोरे पे जाय बिकॉज वी नो तांकर बेसिक क्षमता नाही हैविंग सेड दैट वी कैन नॉट टेक दैट फॉर ग्रांटेड सो आमको नेक्स्ट 10 days 1 month 1 year केबे स्ट्राइक करिवे कहिबनी बिकॉज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉर इज सरप्राइज रो एलिमेंट्स डिसेप्शन डिकॉय ए सब रहिछि सो से माने जणैबेनी केबे करिवे ग्रुप कैप्टेन गुरु जदि देखा जाए ए प्रकार स्थिति जहां वर्तमान भारत पाकिस्तान भितर रही अंतर्जातीय समुदाय सपोर्ट भारत सपक्ष अधिक रहिबो ना नाही देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु आर अगेंस्ट देयर एक्शंस बिकॉज सिविलियंस माने बहुत जन क्षतिग्रस्त होछंती so we have to on thin ice आउ आमर जो चली एटा आज एयर स्ट्राइक है नेवल स्ट्राइक है आर्मी स्ट्राइक है मिलिट्री ऑप्शन संगरे हमको डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक प्रेशर लगे रखा पड़ो सो दैट वी हैव टू स्क्वीज फ्रॉम ऑल साइड्स आउ जो देछन फ्री हैंड टू मिलिट्री दैट्स अ बिग बिग माने द मिलिट्री प्लानर्स निज प्लान करि पारबे कोठी करिवे केमिति अटैक करिवे और कोन करिवे बिकॉज़ हमर सब प्लान रेडी था सब बेले इट इज नॉट दैट एटा हला पर हम प्लान आरंभ करछु प्लानिंग इज ऑलवेज रेडी एंड डन एंड सो वी हैव बी प्रिपेयर्ड तापर कॉलिंग इट ऑफ सिंदूर इज अ वेरी रिलीजियस हमें रिलीजियस कथाई पारिबनी बट द वेरी फैक्ट दैट ताको सिंदूर ना देछंती ता माने वी आर आल्सो कन्वेइंग अ मैसेज कि डोंट फाइट quoting religion. Let us stay away from religion. शेष में ग्रुप कैप्टेन गुरु मुझे पचार चाहिए जे वर्तमान परिस्थिति को आखि आगे रखिले भारतर सेना बाहिनी एवं आम पाखे जहाँ प्रतिरक्षा सामग्री रही ताकू नहीं आम गोटे लंबा समय युद्ध लड़ी पार यही प्रकार गोटे विश्वास भी आम भीतर रहा उचित लंबा समय युद्ध लड़ेबा कथा नुह किंतु जदि आमको लड़ाई को पड़े तो आमर क्षमता पाकिस्तान सांगरे मैनिफोल्ड बेसी अच्छी मे बी आमर जो स्तर रे रहिबा कथा वी मे नॉट बी देयर बट वी आर बेटर ऑफ देन यस्टरडे आउ टुमारो पाई आमे आहुरी चेष्टा करूछु सो दैट वी आर इन अ बेटर पोजीशन धन्यवाद ग्रुप कैप्टेन गुरु आपनकर मूल्यवान मतामत पाई।